नमस्कार, विजय वेशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आईटीवी गोल्ड पर यह कार्यक्रम इस सोमवार जब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तो हम अब भी उस दौर से गुजर रहे हैं जब कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई महामारी ने हम सबको जकड़ रखा है, हमको पकड़ रखा है और इस पकड़ से छूटने की छटपटाहट हम सबके भीतर है। ऐसे समय में वो सारी सावधानियां बरतते हुए आप सुरक्षित और स्वस्थ बने रहें, ऐसी प्रार्थना और कामना करते हुए आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं अंश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें न्यूयॉर्क के गवर्नर ने हमारे साथ बांटी वो सूचनाएं जिनका संबंध है कोरोना वायरस से जुड़े हुए संघर्ष के साथ। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे कोरोना वायरस से ग्रस्त होने के बाद उस पर विजय प्राप्त करने वाले एक सर्वाइवर प्रमोद भगत से। उनका साथ देंगे पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक। हम आप तक पहुंचाएंगे उस मुलाकात का एक अंश जिसमें बंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे एक कवि, शायर और चिंतक सागर त्रिपाठी। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाला है एक इवेंट, अ प्रेयर फॉर द नेशन। जाहिर है ये इवेंट भी वर्चुअल होगा। इसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर सुमिता सेन गुप्ता और कुछ अंश हम आप तक पहुंचाएंगे उस बातचीत का जिसमें स्टिलनेस के यानी शांति और स्थिरता के महत्व के बारे में हमें बताया आर्ट ऑफ लाइफ के सीनियर इंस्ट्रक्टर्स अनिकेत गुने और रुचिका लाल ने। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजय वेशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम हम आपकी सेवा में सोमवार से गुरुवार तक शाम 8 बजे तक पेश करने के साथ साथ एक खास साप्ताहिक अंक आपकी खिदमत में पेश करते हैं रविवार को सुबह 11 बजे। आपके उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं से हमें ये हौसला मिलता है कि हम और अधिक जोश और प्रेम से ये कार्यक्रम और हमारे अन्य कार्यक्रम आईटीवी गोल्ड पर आप तक पहुंचाएं। आप अपना ये प्रेम बनाए रखें, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए गुजारिश बने रहे हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विजय वेशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुओमो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो सारे कदम बांटते हैं जो उठाए जा रहे हैं कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई चुनौती का सामना करने के लिए। और रविवार को अपने संबोधन में उन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे न्यूयॉर्क खुलने की दिशा में बढ़ने को तो तैयार है और जिस तरह हर दिन हम न्यूयॉर्क वासियों को इस महामारी के कारण खो रहे हैं उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी भी आ रही है। देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये अंश। First news is the number of lives lost. That number is still horrifically high. If you're looking for the optimist's view, it's not as bad as it was, but 478 New Yorkers died yesterday from this terrible virus. Everyone is anxious to reopen. Everyone is anxious to get back to work. So am I. Question is, what does that mean? How do we do it? When do we do it? Nobody disagrees that we want to get out of this situation. Nobody. You don't need protests to convince anyone in this country that we have to get back to work and we have to get the economy going and we have to get out of our homes. Nobody. The question is going to become how, when, how fast, and what do we mean in terms of reopening? With reopening, I want to set the bar higher, meaning the question shouldn't be when do we reopen and what do we reopen. The question should be, let's use this situation, this crisis, this time, to actually learn the lessons, value from the reflection, and let's reimagine what we want society to be.
और अब एक मुलाकात प्रमोद भगत के साथ, जो सर्वाइवर हैं कोरोना वायरस की क्राइसिस की सेकंड स्टेज पर से बाहर आने में किस तरह हम उसे देसी इलाज कहें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कहें, या जो एलोपैथी से अलग एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसको अपने जीवन में अपनाकर उन्होंने इसको मात देने में सफलता पाई। उनका साथ इस बातचीत में दिया पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक ने। पेश है इस लंबी बातचीत का ये अंश। Definitely, the social distancing is the most challenging part at this time. That was I got exposed in local store on 15th March, and then I got realized after 4 days in Thursday, March 19th, and all the symptom of COVID-19. And thanks to my all friends and families and whatever the practices I did it, that's really helped me. Because most of 90% of the patients of the COVID sufferer are usually they get body ache, fever, flu-like symptoms, and very tired and lethargic and so forth. But by doing the symptomatic treatment like a rest, a lot of fluids, warm fluids, then of course making yourself little stress-free by doing some meditation and keeping the fever down. Usually 90% of the COVID patients, they recover within 5 to 6 days. But again, some patient, the misery could be a various degree, means more severe than others. And that time, I think alternative medicine also can be complementary. And of course, if after this initial thing, if your respiration or breathing gets worse, or you cannot breathe, or you have chest pain, or that kind of symptoms, then of course you must go to hospital and take the more aggressive treatment. I know that in the hospitals were situations to be get settled, and no medicines except the Tylenol. And my मेरा तबीयत इतना खराब हो रहा था कि then I was on a totally short of breath and very hard time, fever every 4 hours. I was taking the Tylenol, and then I got some nirdesh from yoga teacher and yoga ashram Bihar School of Yoga, and my dad, because in my early age I was a yoga instructor also, and like many my friends had suggested to go to the hospital because short of breath already started and very tough to be take the breath, almost my 1/4 of the energy to take the breath, that only is left over, and the 3-4 days no sleep, very hard time. Then I took the yoga, that's say kunjal, means just 5-6 glass of water with the salt water, it's a warm water, look warm water, and I just drink the water and then I vomit. That way it cleaned up my system, and that's helped me a lot. Then afterward my fever get reduced to 99 from 102 to 103, and then I get slowly better. At that time I had a lot of weakness, and I don't have any smelling power, no taste for food, and got the my some friend has given me the Giloi and Tulsi is Ayurveda product. Giloi is helping for the fever reducer as like a Tylenol, and there is no any side effect. And then it's helped me a lot to manage the fever. And then every 48 hours I was doing the Kunjal Kriya, and that's helped me to be come out to the whole scenario of this tough time. Definitely I can say I was in about to go to the third stage, but I came out from that stage. That's helped me a lot. And then afterward a lot of people has requested me, please write all the practices and share to all family and friends. That's why I'm here to sharing you, Dr. Sahib, also as well the ITV Gold and Sokji. Definitely it's helping a lot of people. And third stage, I always suggest, please go to the hospital. Don't delay it if it's on third stage. For second stage, if
there is only two solutions at this time, according to my experience. First is social distancing is very important this time. Second one is to increase our immune. So increasing the immune, giloi, tulsi, chavanpras, haldi milk, kada, that's very important to fight. And kunjal is a really, we can say, is a sanjeevani. If is somebody has to do in a first level or second level, definitely they will come out to danger zone. आप किस तरह संयम रखकर अपने जीवन में अपने मनोबल को बनाए रख सकते हैं, इस दिशा में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्ट ऑफ लाइफ से संबंधित सीनियर इंस्ट्रक्टर अनिकेत गुने और रुचिका लाल से हमारी बातचीत का ये अंश। I think every situation has a silver lining, and this one definitely has a lot of silver linings. Right? I think the ability to kind of not let the noise and the distraction that we'd gotten ourselves into, we were so busy running, chasing, that we were not really listening to our inner voice at all. We were constantly distracting ourselves. And it's a really good time to connect back with ourselves, to ask the deeper questions in life. Why am I here? What's my purpose? I think mortality has become very obvious. We all know that we're not going to be living on this planet forever, but we were going about as if we were going to live forever. And, you know, the time that we have on the planet, what do we really want to do? I think it's also, while there's physical distancing, people are far more connected. I mean, I know of people who had never been on Zoom or on social media now are connecting with each other and families. So I think people are finding a way to connect, even though there is a physical barrier in the way the connection's happening. But I think emotionally people are connecting. So it's a great time to kind of look inward. And also nature. Like, you know, you're hearing stories about how pollution in so many places has gone down. Animals are rejoicing. Nature's rejoicing. So in some ways, it's a little bit of a reset for everything. And if we can also take this time to go inward and ponder on the deeper questions of life and our purpose, I think we'll come out of it very different. I think we notice others more than what we notice what is happening within us. Yes. It's like I noticed that Aniket ji was sipping some tea or coffee. Probably he's enjoying that. But now talk to me a little bit, Aniket ji, about awareness. How to be more aware of our feelings and emotions in a dynamic fashion. I think you linked awareness with emotion, so we'll go in that direction. I think with emotion, what happens is we are resistant to certain emotions and we only are craving for certain emotions in our life. So let's say if we feel discomfort or if we feel frustration, anger, we want to step away from it. And then because we are unable to do so, we are further angry. So we get into this cycle where those emotions get stuck on even harder, right? But at that time, even if you have like a gentle awareness, oh, this is the dynamic that is happening, that awareness itself will separate you from that emotion and will change automatically. Because there's a rule in life, right? There's a rule in the mind. What you resist, it persists, right? So the more you resist certain emotion, the more it's going to stick on with friends and family and cousins, right? But the moment you're able to embrace it, accept it, and recognize it, it passes like clouds floating and it leaves you. So the role of awareness is very, very high actually in terms of helping us move through these events that happen in our life with equanimity. Now, there could be some negative emotions that you resist. For example, you feel a lot of anger towards someone. So you resist it. Will that persist or will it go away, Ruchika ji? I mean, is that not something that is suggested, that you do not entertain these kind of emotions more and sort of resist them? I think so. Resistance has force in it, right? So for you to resist something, there is an opposite force to it. So the more you're resisting it, the more it's pulling in the opposite direction. If you can just accept it, it dissipates. Right? The point is what you said, is acceptance. The moment you accept anything, it moves to the background. The moment you cannot accept something and you resist it, it takes center stage.
right? Even this thing of, I don't want to be angry with so-and-so person. I don't want to be angry. We're putting so much energy in the I don't want to be angry that we're actually putting more energy behind the anger. जाने माने कवि, शायर, चिंतक सागर त्रिपाठी मुंबई से हमारे साथ जुड़े और उनकी पहचान में हाल ही में एक और उपलब्धि जुड़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को उनके एक शेर को कोट किया संसद में। साथ ही उनका एक शेर सुनाया गया उन एस्ट्रोनॉट्स को जिनको हौसला बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री का संबोधन और एक बड़े वैज्ञानिक को उनके द्वारा एक नाजुक मौके पर दिया गया आलिंगन हम सबकी स्मृतियों में कैद है। प्रस्तुत है सागर त्रिपाठी से हमारी बातचीत का ये अंश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सागर त्रिपाठी जी का शेर न केवल संसद में उसको उन्होंने एक बार उसको कोट किया, बल्कि एक और महत्वपूर्ण अवसर पर भी उनका शेर मोदी जी के द्वारा हम तक पहुंचा और फिर उस शेर पर बड़ी चर्चा रही। तो उसमें से एक शेर मैं सुनाता हूं, पर फिर हम सागर जी से भी सुनेंगे और बल्कि वो पूरी गजल सुनेंगे जिसमें से ये शेर आया है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का। तो ये शेर सुनाने वाले शायर हमारे जो हैं, जिनका शेर है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। वाह 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 सागर साहब, क्या बात है, बधाइयां आपको। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है तो फिर छोटा देश सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं। और इसलिए जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो पहले हम इसी शेर पर बात करते हैं, ये कौन सी गजल में से है और कब लिखा गया था, कुछ इसके बारे में बताइए। दरअसल हमें तो पता भी नहीं था। एक शायर दोस्त है मेरे, आज तक के पहले करस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने हमको सडनली कॉल किया कि भाई साहब आप टीवी देखिए, आपका शेर प्रधानमंत्री जी पढ़ रहे हैं। तो झटके से हमने खुला, वो संसद का वो था, तो उसी में 25 जून की बात है, शाम के 8 कुछ बजे रहे होंगे, देर तक सेशन चल रहा था। लेकिन मुझे अच्छी चीज ये लगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, एक होता है कोई आदमी कोई बात प्रभावित करने के लिए शेर पढ़ता है, ऐसा नहीं था। वो उसके पहले 14 मिनट तक लगातार बोलते रहे और मुझे विश्वास करें कि मैं इतना रोमांचित हो रहा था उनको सुन करके कि जब उन्होंने ये कहा कि मुझे बिल्कुल ये इससे मतलब नहीं है कि चीन कितना शक्तिशाली देश है या अमेरिका की सामरिक शक्ति कितनी है, मैं नए भारत की कल्पना लेकर के अपने लक्ष्य को देख रहा हूं, मुझे नए भारत का निर्माण करना है। और 14 मिनट बोलने के बाद एकाएक उसी फ्लो में उनके मुंह से निकला कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कदे आसमान का। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शेर को इससे अधिक यथेष्ट पदवी कभी नहीं मिल सकती। सोचिए, भारत के महान नेता, विश्व नेता हैं, शिखर पुरुष हैं, और उन्होंने पूरी कायनात को साथ लेके, भारत की प्रगति को साथ लेकर के मेरे शेर को कोट किया। कोई किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं ये शेर कोट किया था। आप कहें तो वो मैं पूरी गजल, मैं आपसे पूरी गजल सुनाने का अनुरोध कर ही रहा हूं और उसके साथ साथ मैं आपके साथ ये दोहराना चाह रहा हूं कि इसका मतलब उन्होंने शेर को कितनी गहराई से समझा, जीवंत किया उन्होंने, जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने वो शेर सुनाया, उससे पता लगता है कि उस शेर की जो आत्मा है, जो उसका सार रस है, वो मोदी जी के सामने स्पष्ट था। उन्हें प्रभावित किया होगा, क्योंकि उसके बाद उसी दिन 9 से 10:30 तक आज तक ने इस पर स्पेशल प्रोग्राम किया। क्या बात है, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी। मैं वो गजल आपको सुना देता हूँ। जी स्वागत। और चूंकि शायर हूं तो झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा, इसमें 2 शेर बाद में हमने सामयिक सापेक्षिक के जोड़ दिए हैं। जी जी, गजल पूरी ये है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कदे आसमान का। वाह। इसमें एक मतलब मैंने और जोड़ा कि जिसको जरा भी ध्यान है हिंदुस्तान का,
वाह। आपके मिजाज का शेर है ये। जी जी। जिसको जरा भी ध्यान है हिंदुस्तान का, उसको है एतबार हमारी जबान का। क्या बात है, क्या बात है, फिर से कहें। और हाँ, जिसको जरा भी ध्यान है हिंदुस्तान का, उसको है एतबार हमारी जबान का। हम चाहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, पूरे विश्व में शांति हो, और इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रार्थना एक अमोघ अस्त्र की तरह हमारा साथ देती है। एक इवेंट अ प्रेयर फॉर द नेशन आयोजित किया जा रहा है। स्थान तो होगा शनि महाराज का मंदिर, पर मूलतया इस कार्यक्रम में आप वर्चुअली जुड़ सकते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर सुमिता सेन गुप्ता ने। We'd like to invite every single viewer and spread the word, please, about an event, and it's called A Prayer for the Nation, and it's specifically to overcome the suffering we're all feeling from COVID-19 pandemic. This prayer is going to be held on Earth Day, which is April 22nd, 2020. And the selection of the day is very important. The reason is that the earth where we live gives us everything. She's our mother. She nourishes us. And we are also going to respect her and pray to the Almighty that we all overcome this. On April 22nd, 2020, we're having from 7 o'clock p.m. to 8 o'clock p.m. a special prayer to alleviate the suffering from COVID-19 and to overcome it. And that will be held at the Navagraha Devasthanam under the leadership of Mr. Sridhar Shanmugam. And you will be at your homes, and you can use Zoom meeting, and your show will show how to access that. As well, if you can't get into Zoom, then you can join us through the telephone with your iPhone. Now, most importantly, we ask people to join us to light a diya, a lamp or a candle or whatever they have during that time period in solidarity to say a prayer to the Almighty so that we can all overcome. And that is why we're holding that, so we can build unity while we're living in social isolation. We are not isolated from prayer and for helping each other through this very difficult time. और आज का विजन ऑफ एशिया अवॉइडेबल कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए हम आपको याद दिला दें कि फेसबुक पेज पर आप ITV गोल्ड के फ्रेंड बने और ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह हमारा संबंध और प्रगाढ़ बना रहेगा। इवेंट्स के बारे में आप हमें लिखते रहें events@itvgold.com पर अपनी सूचनाओं के साथ साझा करके हमारे इस संबंध को और आगे बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का क्षण आ पहुंचा है। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।